Okay, now today we will discuss uh, the next topic, that is identification of recombinants. So as you all know, we have made an rDNA and that is sent to a host. So in this process what we do, we will make a huge copies of vector, and to which we will add huge number of multiple number of our insert, and how many of them become recombinant we don't know. Some may become recombinant, some may not. And now these are transferred to a mixture or to a vessel containing our host cells, and once they are transferred to the host cells, we don't know how many of them have taken, or how many host cells have taken your vector, and how many host cells may they may not take. Probability is there. So let us see what are the possibilities. First is a host cell, a host cell with a vector. This is without a vector, the other one is also with a vector. So we discussed three possibilities. The first one is with vector and they have our gene of interest. Second one is with vector but that is not containing our gene of interest. Third one is the host itself which do not take up our vector. Now the question comes, whom we need to grow further. As you all know, we need to grow this first kind. That means we have to remove these two, or we need to select first one. So identification of recombinant host is a major technique in the recombinant DNA technology. We should know and we should select those hosts which contain our gene of interest. They are known as recombinants who have undergone recombination. They are known as recombinants. The procedures which we followed will not give 100% host with recombinant vectors. So let us see what strategy we follow. Let us take or recall the vector PBR 322. PBR 322 का पार्ट्स आपको याद है, ओके? एक इसमें है एम्बिसेंट डिस्टेंट जीन, दूसरा है origin of replication, and they also have tetracycline resistant gene. This tetracycline resistant gene contain a restriction site for BAMH1. Okay, so this is in PBR 322. अगर हमने PBR 322 यूज किया है तो हमारा gene of interest will go and attach within the tetracycline resistant gene. This is
ampicillin resistant gene. This is tetracycline resistant gene. Okay. So what happens here? Two marker genes are there, and one of the marker gene gets affected by introducing the gene of interest. I hope this is clear. दो मार्कर जीन है, उसमें एक में रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो यदि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें जाके अटैच हो रहा है तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन गेट इनएक्टिवेटेड. नाउ सी हाउ सिलेक्शन इज डन. सपोज हमारा पिछला केस 1, 2 and 3. Okay, 3 different possibilities. Okay, थर्ड वाला, that means वेक्टर होस्ट के अंदर गया ही नहीं. So all the hosts are now in this cell. हमने इस सारे सेल्स को एक पेट्री डिश में ग्रो किया, एंड इस पेट्री डिश में आपको पता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम न्यूट्रिएंट मीडियम डालते हैं. इस मीडियम में हमने एम्पीसिलिन डाला है. एम्पीसिलिन इज ए एंटीबायोटिक. तो इसके अंदर एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक रहने की वजह से host cells which are not resistant over ampicillin cannot grow. तो ये थर्ड टाइप यहाँ ग्रो नहीं करेंगे, बाकी दोनों टाइप यहाँ ग्रो करेंगे. तो अभी हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया जो होस्ट सेल जिसके अंदर हमारा वेक्टर गया हुआ है. अब है 1 and 2 को करना. 1 में हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, 2 में हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है. अब इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो हम देखते हैं. ये हमारा 2 सेल्स है. ओके, एक में वेक्टर है, दूसरे में रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है. रिकॉम्बिनेंट वेक्टर टाइप 1 है और ये टाइप 2 है. हमें इन दोनों को सेपरेट करना है. फॉर दिस we'll take the plate which is grown earlier. इसके अंदर 1 and 2 दोनों हैं, और इस सेल के इस प्लेट में हमने क्या एंटीबायोटिक डाला था, एम्पिसिलिन. ओके, अब हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे. दिस मेथड इज नोन एज रेप्लिका प्लेटिंग. रेप्लिका प्लेटिंग मतलब इसके ऊपर हम एक स्टाम्प जैसा वुडन स्ट्रक्चर के ऊपर वेलवेट शीट डाल के एक बार इसके ऊपर टच करेंगे, और उसी को एक दूसरा मीडियम में, फ्रेश मीडियम में, जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन डाला हुआ है. इस मीडियम में एम्पिसिलिन है, इस मीडियम में टेट्रासाइक्लिन है, और इसका कॉपी इधर बना लिया हमने. इसको यहाँ से आके इधर टच किया. देन दिस इज अलाउड टू ग्रो. माइक्रोब ग्रो करने के लिए 1 दिन लगता है. ओवरनाइट वी नीड टू कीप. आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन, सपोज हमें इसमें कुछ कॉलोनीज मिला, सो वी नीड टू सी द पैटर्न. ओके, I'll just draw for our convenience only 3 colonies. Here only 3 colonies were there. Okay, and when it is grown, हमें उसमें से फर्स्ट कॉलोनी मिला. The other 2 colony we didn't get on the second plate. What does it mean? It means that these are the cells which contain recombinant vector. कैसे? इस सेल में
टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन नहीं है, क्योंकि वो जीन इनएक्टिवेट हो चुका है बिकॉज ऑफ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। और पहले वाला केस में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है इसलिए वो ग्रो कर पा रहे हैं, यहाँ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है इसलिए ग्रो कर पा रहे हैं, और यहाँ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन नहीं है इन दोनों में इसलिए वो नहीं ग्रो कर पाए। टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन क्यों नहीं है? क्योंकि वो जीन इनएक्टिवेट हो गया बाय इंसर्शन ऑफ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जाने के बाद ये जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड। कौन सा जीन? टेट्रासाइक्लिन। इसलिए दिस कंटेनिंग होस्ट कैन नॉट ग्रो इन सेकेंड प्लेट। तो सेकेंड प्लेट में ग्रो नहीं कर पाया, फर्स्ट प्लेट में ग्रो किया क्योंकि एम्बिसेंट रेसिस्टेंट जीन उसमें था, सेकेंड में ग्रो नहीं किया क्योंकि एम्बिसेंट रेसिस्टेंट जीन उसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन उसमें नहीं था। क्लियर? This technique is also known as insertional inactivation. So insertional inactivation is one of the techniques used for selection of recombinants. Here, by inserting the gene of interest, that is insert, one of the marker gene gets inactivated. एक मार्कर जीन इनएक्टिवेट हो गया और जिसकी वजह से हम उसको सेलेक्ट कर पा रहे हैं. Okay, this is known as insertional inactivation. Another major example in this is blue-white selection. It's also known as blue-white screening. This is in the case of PUC19. एक बार हम PUC19 को दोबारा बना लेते हैं. ओके, PUC19 में कौन कौन सा पार्ट है? एक पार्ट है this is again as usual ampicillin resistant gene और एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं लैक्सेट जीन. Then origin of replication. This lacset gene contain multiple cloning site. This is MCS, multiple cloning site. अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आप इसमें डाल रहे हैं तो that insert will go and fit in this region which will make laxate gene inactivate. Now see once again ampicillin resistant gene, laxate gene, origin of replication. अगर हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं तो वो कहाँ जाके अटैच होगा? इनसाइड द laxate gene and laxate gene get inactivated. Now see इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग कैसे करते हैं. The host cells after the transfer of gene of interest, they are allowed to grow on a plate which contain ampicillin and another chemical which is known as X-gal. Okay. Over this plate we can see some colonies which are blue colored, some colonies which do not have blue color.
Now see why these two colored colonies are formed and what is the principle of this. Suppose that PUC19 laxate gene is active. The laxate gene produces an enzyme beta galactosidase. This beta galactosidase can digest X-gal and form a blue color. And once they form blue color, that means they have a laxate gene active. If laxate gene is active, this figure देखो, if laxate gene is active, that means यहाँ पे कोई gene of interest नहीं है. अगर laxate gene inactive है तो उस केस में अगर laxate gene inactive है तो उसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा, तो वो एक्स-गाल को ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. तो these cells are actually recombinant and these cells are non-recombinant. इनके सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है और कलर के थ्रू हम इसको सेलेक्ट कर पा रहे हैं. That's why it is known as blue-white screening. Once again, हमने आज का टेक्निक किया था और टॉपिक किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स. उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया 3 टाइप्स ऑफ होस्ट बन सकते हैं. वन कंटेनिंग origin of interest, another does not containing origin of interest but vector है, third who did not take vector at all. तो सेलेक्ट करने के लिए हम actually if it is VBR322 we will grow them on ampicillin medium, then the host which do not have vector will not grow there, and then what we do, we will make a replica plating and we will grow the cells over tetracycline medium. Tetracycline medium में the cells which are recombinant cannot grow and the cells which are non-recombinant will grow. So by comparing these two plates we can select the cells which are containing our recombinant vector. इसलिए हम इसको रेप्लिका बनाते हैं. पुराने वाले को अगर आप हटा देंगे तो आपको ये कॉलोनी नहीं मिलेगा. Then moving on to the next is the technique is also known as insertion and activation and blue-white screening, where when PUC19 is used as a vector, PUC19 contains a laxate gene which gets inactivated at the time of insertion of gene of interest, and the host containing recombinant PUC19 cannot digest the X-gal present in the medium and the cells will be non-blue color, whereas the cells containing laxate gene, that means they are non-recombinant, they digest X-gal and produces blue color. Okay, this is insertional inactivation. And there are many other techniques. Okay, one of the important techniques है blue-white screening. Many other techniques है, one by one we will discuss. So for this session, this much is enough. Okay, thank you.